All right, ladies and gentlemen, we are doing Pushya Nakshatra on the day of Pushya Nakshatra and on the day of Ravi Pushya. That's something very, very auspicious because it is said in the shastras that if you take the name of the nakshatra on the day of the nakshatra blessing starts immediately. And we are going to take this name, many times today in this class. So, a lot of blessings from Devaguru Brihaspati, who is the ultimate deity of the Pushya Nakshatra. You're going to have blessings. Now, ladies and gentlemen, let me, you know, share my whiteboard, which is something, my favorite thing to do because, beside the presentations, I feel a personal, touch when I start with the whiteboard. So it is the eighth nakshatra in the nakshatra belt system, and eighth nakshatra belongs to Shani when it comes to Vimshatri Mahadasha system, and it is right in the heart of Karka, Cancer. So 3 degrees and 20 minutes to 16 degrees of 40 minutes is where our rishis, our munis have placed the Pushya Nakshatra. Okay, so this is a division that has been assigned to Pushya Nakshatra by our great sages. And it has combination of 3 planets, the energy, the powerhouse, Cancer, overall the outer transformer, which gives you energy is Moon. Okay, that's something which is very near you. So Rashi, zodiac sign, the division created by our sages, which has the energy of Moon, is very near you. Okay, for an example, when you start traveling to the sky towards the Pushya Nakshatra, the first energy you will feel is Moon, and then the next energy you will feel is Saturn. Okay, Shani, because based on the Vimshatri Mahadasha system, so that's the layer 2 when you feel, so that's Saturn. And then, in fact, I should write it this way, so I should, like, we are here down south, so what we should do is we'll write like, okay, this is Moon, so we poor fellows are standing here and looking at the sky, and we feel Moon energy and then the Saturn energy, and then on top we find the energy of the deity, which is close to the god Jupiter, Dev Guru Brihaspati, right? That's how you actually feel the energy, the 3-layer energy. A lot of nakshatras have this layer, the zodiac layer, which is the energy of that zodiac sign, and then the planet associated with the nakshatra, and the deity, the devata associated with the nakshatra. What a beautiful combination that we have. It is a dharma karma, and then your dharma karma combination is coming through your mind in your body. It is absolutely fantastic, right? Now, ladies and gentlemen, this is the Pushya is considered as the star of nourishment. Okay, so lots and lots of nourishment is seen, in the Pushya Nakshatra. Now, when I say nourishment, what does it exactly mean? It means that, this nakshatra has an energy to provide nourishment to a native. You know, when rishis were dividing this entire sky into 12 equal parts, making 30-degree as one energy and 30-degree another energy, and you call these energies as rashis. The word rashis come from Rahu and Shi, which is Ketu. So, the desire and what you've already achieved.
So our life is all about, you know, our desires, and we cherish things that we have already achieved, and whatever we have achieved, we are getting the results, of our achievements in our life. So when they looked at the fourth division of the sky of the 30 degrees, which was Cancer, they found an energy from 3 degree 20 minutes to 16 degree 40 minutes of Cancer to be the most auspicious energy out of all 27 nakshatras. Trust me, guys, most auspicious. And that is why Pushya is considered as the king of all the nakshatras. If somebody asks you in one line, which nakshatra is the king of, in the zodiac, Surya is the king of all the planets. So Pushya is the king of all the nakshatras. That is fantastic. Absolutely fantastic. It is considered the king because it gives you highest amount of nourishment. We are all, striving for the nourishment. We need nourishment from every relationship. As a guru, I need nourishment from my students, and as students, you need nourishment from guru. As a parent, you give nourishment to children, and as the children, you accept nourishment from parents. You require this nourishment from every relationship that you have in your life, be it your wife, be it your spouse, be it your friends. We earn money, we buy cars for some sort of nourishment. Whenever we add luxury to something, you think it is giving you nourishment, but then there is difference between nourishment and comfort. Sometimes you can get comfort, but there is no nourishment. I must tell you that. Nourishment is that selfless feeling that can only be provided by a mother. That is why moon is associated. That is why Viraspati said that, okay, in the zodiac of moon, which is the only zodiac out of the 12, moon has got just one zodiac, right? It doesn't have two. So Viraspati said that I'll have to define nourishment to the people. People will confuse nourishment with comfort, enjoyment. And I'll tell them that the comfort and enjoyment is very, very different from the nourishment. Nourishment is absolutely selfless. There is no selfishness in nourishment. That is why at time marriage is not a relationship of nourishment, because at times marriage is not selfless. There is always scope of give and take. If I did this for you, what have you done for me? In the marriage. And having a selfless relationship, you can only have two types of selfless, relationships in this world. One is parenting. Parents will be selfless for their children. Always. And the second selfless relationship that you can get is Guru Shishya. Because आप अपने गुरु का देना दे ही नहीं सकते. You can't give it back to him. If I am giving you this knowledge, I am giving you this knowledge for the lifetime, and nobody can take this knowledge back from you. It is given for whole life and even for the next life also. Can you imagine? That's the selflessness
Guru has. And there are very few people on this universe who would understand that selflessness of a guru, of a teacher. And Pushya being the most auspicious nakshatra, and especially if Pushya nakshatra falls on the day of Thursday or Sunday, which is known as Guru Pushya and Ravi Pushya. So if Pushya nakshatra falls on the day of Thursday, Guru Vara, it is known as Guru Pushya, which is considered highest in among all the beneficial yogas in the world, in the scriptures. Guru Pushya and then the Ravi Pushya. You ask any Jnani Pandit that what is the best muhurata, which is the best muhurata to perform certain duties or buy things or do something which is very, very auspicious. He will say, oh, Pushya nakshatra mein kariye na, Pushya bahut hai. Pushya, Guru Pushya and Ravi Pushya are the 2 days, irrespective of Tithi, Var. These are the 2 days that are highly auspicious, highly auspicious. But do not make a mistake to get married on this day. Oh. So Ravi Pushya, Guru Pushya, not a good muhurata for marriage. You know what? Lot of scriptures have said that, the problem is that Brihaspati never supports marriage. But he is a Jiva Karaka, he is the Karaka of getting children. मेरे को समझ में ही नहीं आया यार, ये कैसे हो सकता है कि एक जो इतनी बड़ी पावर है बृहस्पति, वो शादी को सपोर्ट नहीं करती है, बच्चों को सपोर्ट कर रही है. ये क्या बात बनी? It doesn't make sense, no? You don't like marriage, but you like children, huh? How can you get children without getting married? So when you go deep and understand the life patterns of a graha, of a deity, you understand everything. The story of Tara. Tara was the wife of Brihaspati, the guru of Devas, the priest of Devas, all the Devas. And if you are a priest of all the Devas, you have to be mentor and perform all kind of yagnas for the Devatas. किसी के देवता के घर में हवन करवाना है, यज्ञ करवाना है, तो बृहस्पति को बुलाया जाता है. तो इस शेड्यूल की वजह से बृहस्पति वाज ओवरली ऑक्यूपाइड. हर रोज किसी ना किसी देवता के घर पे यज्ञ हो रहा है, कोई अनुष्ठान हो रहा है, परिहार हो रहा है, तो देवगुरु बृहस्पति को बुलाया जा रहा है कि देवगुरु बृहस्पति आप आइए और इस देवता के घर पे ये कर दीजिए. कभी कोई यजमान बुला रहा है, कभी कोई यजमान बुला रहा है, वो जा रहे. तो ये थोड़ा सा इनडिफरेंट हो गया टुवर्ड्स तारा. और somehow this made her elope with Chandra. She got involved with Chandra. Chandra is very sensuous, beautiful, romantic. तो वो थोड़ी सी ऑफ ट्रैक हो गई and she got eloped with Chandra. Obviously, Brihaspati was deeply hurt. And he went to all Devas and he said, see, look what this Chandra has done. So all the Devas came to Chandra and they convinced Chandra that this is not good, this is bad, this is not done. So Chandra returned Tara. He said, okay, Tara, you go back, I can't, because
पूरा समाज, पूरी सोसाइटी. And she went back. Brihaspati was upset with Tara. So hesitately, she came back to Brihaspati, and after some time, she said that she's pregnant. And she's pregnant from moon. Now Brihaspati was angry, but then he's a guru. He's a priest. His mind is sattvic. Although there was not a very good relationship after this incident between Tara and Brihaspati, obviously, but a child was born, and Brihaspati has said कि इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है. And Brihaspati accepted that child, and the name of the child is Mercury, Budh. Budh was born. So Budh never liked moon, but he respects Brihaspati a lot. Buddhi. That is how Budh was born. So from that day onwards, Brihaspati became the Karak of children, Jiva Karaka. All the Devatas were so happy that they granted Brihaspati as a Jiva Karaka कि आज के बाद कोई भी बच्चा जन्म लेगा वो आपकी कृपा से लेगा, आप इतने महान हैं. But Brihaspati is not good for marriage because he says marriage में क्या है, बकवास है ये सब. You know, I was busy in the rituals, I was doing my duty, and she eloped with moon. How pathetic is that? और इसीलिए जब बृहस्पति सप्तम भाव में आकर बैठते हैं तो वो विवाह को डिले कर देते. वो चाहते ही नहीं है कि शादी. उनको पता है कि शादी के बाद बहुत से हिडन धोखे होंगे. 90% कपल्स जो हैं वो विवाह के बाद एक दूसरे को छिपा हुआ धोखा देते हैं. Females will talk to their parents about the family of the husband silently. ये तो ऐसे होता है, ये वैसे करते हैं. मम्मी ये बोल रही थी, पापा ये बोल रहे थे, भाई ये बोल रहा था. They're telling everything about their husband's home, and then husbands may go out, on their business trips and have fun. These are all these, nonsense happening in Kali Yuga. That is why Brihaspati says, क्या फायदा marriage का? Marriage से nourishment थोड़ा ना मिलती है. Marriage is a give and take. Marriage से romance मिलता है, बच्चे होते हैं, utilization of the sperm is there, utilization of the ovum is there. That is why marriage के कारक बने शुक्र, देव, गुरु बृहस्पति नहीं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य. He became the karaka of marriage, and Brihaspati is the karaka of having children. Now you get married, then Brihaspati says stick to the children, okay? Don't ditch, don't deceive each other. So if you have a strong Jupiter in your horoscope, in the Lagna, in the 7th house, chances of a destroyed married life is there. Not good. Not good. You will be intelligent. You will love children. You will have children with Brihaspati in the Lagna. With Brihaspati in the 7th house, you will have children. Only if it is not debilitated or it is with less degree, that's a different story. But do you think you'll have a prosperous married life? Jupiter doesn't like it. So what is the take home from the story? You understand, जो जिस चीज से डरा होता है, जिसको जिस चीज में धोखा मिला होता है, उस चीज को प्रमोट नहीं करता वो. आपको शेयर मार्केट में आपके पैसे डूबे होंगे, आप बोलोगे सबको शेयर्स खरीदो. आप बोलोगे कभी मत खरीदना, सब कुछ लुट जाता है इसमें. डोंट डू इट. जिसकी मैरिड लाइफ खराब हुई होगी, क्या वो मैरिज की रिस्पेक्ट करेगा? नहीं करेगा. He would want people to think about it, okay, you want to get married, I understand, just think again, ऐसा हो जाता है. So that is causing a delay. That is why Jupiter in the 7th house causes a delay, and lot of astrologers, give them pukhraj to get married. Imagine what nonsense these people are doing with Jyotisha. शादी नहीं हो रही, बेटा पुखराज डाल लो.
अरे पुखराज डाल के तुमने शादी तो करवा दी, क्योंकि बिना शादी के बच्चे नहीं होते, लेकिन डिवोर्स भी करवा दिया। अगर आपका बृहस्पति लगन में है, सप्तम भाव में है, आप पुखराज डालिए। जिस दिन पुखराज आप डालेंगे, आप स्पिरिचुअल तो हो जाएंगे, लेकिन आप तैयारी कर लेंगे अपनी मैरिड लाइफ को खराब करने की। यू आर एक्चुअली गेटिंग मैरिड टू गेट डिवोर्स, एंड दिस इज वेरी डीप. Nobody understands this. You are bound to get anger and problems with Pukhraj, if you are doing it for the sake of marriage. अगर शादी हो चुकी है, आप पुखराज किसी और पर्पस के लिए डाल रहे हैं, for having children, for spirituality, for expansion of your work, fine, you can go ahead do it, but do not do it with intention to get married. It is a sin. आप नहीं कर सकते ऐसे. You cannot, you should not. यहां पे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है. बृहस्पति was born to the sage Angiras. बहुत बड़े ऋषि हुए अंगिरस. उनकी संतान है देवगुरु बृहस्पति, और उनकी वाइफ श्रद्धा. श्रद्धा बृहस्पति देवता की माताजी हैं. उन्होंने बहुत यज्ञ किए, बहुत पूजा की अग्नि देवता की, और उनको कहा कि उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुत्र चाहिए, एंड दे वर ग्रांटेड. बृहस्पति का नामकरण मुनि नारद ने किया था. मुनि नारद उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और बृहस्पति का नामकरण करते हुए कहा कि इसको आप बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशन देना. गिव हिम द परफेक्ट एजुकेशन. Angiras agreed, and he commenced in giving, and the child attained the knowledge of shastras and Puranas at a very young age, and he became the priest of all the devatas. For education, for pariharas, for learning Jyotish, for having a clear mind, it is very, very important to have Brihaspati well placed in the chart, but not for marriage. So Pushya Nakshatra, especially Ravi Pushya or Guru Pushya, is a day when I recommend my followers to get a child conceived. If you want to go for an IVF or IUI, आपको पता लग गया कि इनका डायरेक्टली बच्चा नहीं हो रहा है, इनको IVF करवाना चाहिए, IUI करवाना चाहिए. The best day you can recommend someone is the days of Ravi Pushya or Guru Pushya. And out of the Guru and the Ravi, the best will be Ravi Pushya. Because Surya is the spark, Surya is a karka of immunity. IVFs will hardly fail if the IVF is done on the day of Ravi Pushya, like today. So I want each one of you to flash the dates of all the Ravi Pushyas of this year in the group after the class, and also the dates of all the Guru Pushyas of this 2023 in the class. You see, when you flash those, you are giving opportunity for yourself and the people who follow you, or people whom you can advise, that if you want to do anything for your children, you want to have children, these are the 2 days. Even if you're trying biologically, you can try it when it is Thursday and the nakshatra is Pushya.
Very important. Same as for Ravi Pushya. I have seen people who are born as Pushya, as a Janam Nakshatra. These people are very pure. They have a pure heart. They want to learn Jyotish. Especially like Manas said, he has Jupiter in Pushya. He has direct blessing of Brihaspati on him. That is why he quit everything and started. It is given his life to Jyotish. That I will learn Jyotish. He's fighting, he's struggling, he's saying, no, good Papa, I want to learn Jyotish, I want to learn Jyotish. Because it is direct blessing of Brihaspati on him. Brihaspati wants him to learn Jyotish. This is the message in his chart. And if you can understand it, please understand. If you can't understand, you are a fool. When you have moon in Pushya, you are born to give nourishment to others. You are born. And you know what? That nourishment is selfless. Selfless nourishment होती है ना, अपने आप के बारे में कभी सोचा ही नहीं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहे, कभी नहीं सोचा अपने आप के बारे में, और माफ करते रहे. बृहस्पति ने कितना माफ किया. It takes a very huge heart to accept your wife back when she slept with someone else. आसान नहीं है. And you accept your wife back. That means people born in the Pushya Nakshatra have a very forgiving nature, and people can take you for granted. जब आपके ग्रह पुष्या नक्षत्र में होंगे ना, आपसे ना नहीं होती किसी से, आपसे ना नहीं होती, आप हर एक को हाँ कर देते हो, ना नहीं बोली जाती है आपसे, और लोग आपको ग्रांटेड लेंगे. People will take you granted. विवेक, आपका जो बेटा है जिसका जन्म नक्षत्र पुष्या है, उसके चेस्ट पे कोई मोल है? चेस्ट पे कोई निशान है, बर्थ मार्क चेस्ट के ऊपर, या मोल है चेस्ट पे? चेस्ट पे तो नहीं है, उसके पैर पे है, घुटने के पास. ओके, कभी चेस्ट पे चेक करना. आई विल चेक. राइट, बिकॉज पीपल विद पुष्या यूजुअली हैव अ स्मॉल मोल, you know, especially, and or small dot or something on the chest area, वहां पर होता है, आप चेक करना. ओके, विनय सिंह गुरु जी, आई हैव, या. तो पुष्या में अगर आपके ग्रह होंगे ना, तो आपके चेस्ट पे हल्का सा मोल ये आता है. दिस इज समथिंग व्हिच इज या ऑन द नेक. देखा? सो नेक चेस्ट के एरिया के पास होता है. दिस इज रिटन इन द शास्त्र. दिस इज क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के था, सो वो एक रहती है वो चीज. सो दैट इज यस ऑन चेस्ट. सी, देखा? यस यस यस, कितना यस आ रहा है. सो देख लो कि कितने पावरफुल हैं, यू नो, दीज. सो द चेस्ट एरिया आ गया ना, तो चेस्ट एरिया, गर्दन, चेस्ट, शोल्डर, सेम लाइन. यस सर, ठीक है ना. तो ये चीज पुष्या, क्योंकि सिमरत जी का मुझे पता है शायद चंद्रमा पुष्या में है, राइट. एंड I don't have mole on the chest, but on the face. नहीं, I mean chest area, shoulder से, गर्दन से नीचे आप बात करिए, तो वहां पर है. तो सिमरत जी का चंद्रमा पुष्या में है ना, तो वो सेल्फलेसली मदद करती रहती सारी जिंदगी. जब से वो मेरे साथ जुड़ी हैं, आप सब लोगों की सेल्फलेस मदद करती हैं. सो यू नो, आई थिंक सबको एक बार तो उनके लिए एक, यू नो, you should give a round of applause for her, because she's the one, you know, who's always, you know, behind me, behind all of you, supporting. And that's the real gift of Guru Brihaspati in my life, Simrat ji, right. So Guru Brihaspati ने वो मुझे आशीर्वाद दिया है कि आपको हम एक सिमरत देके भेजेंगे जो हमेशा सब स्टूडेंट्स की मदद करेगी, right. That's so beautiful. Right, I think एक थैंक्स तो सबकी तरफ से बनता है. सब. Thank you so much, Simrat ji. Thank you. I always keep thanking you. Thank you. You are a blessing. Thank you. Yes. Thank you, Simrat ji.
अरे प्लीज सर, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। नहीं, मैंने ज्यादा नहीं किया, आपकी ब्लेसिंग्स है सर बस। नहीं, आप जो थैंक यू कर सो रहे मच, हैं, थैंक यू सो मच सिमरत जी, बिल्कुल। क्योंकि जो आप कर रहे हैं ना सब स्टूडेंट्स के लिए सेल्फलेसली, वो कोई नहीं कर सकता। सर आई जस्ट, सॉरी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आई एम सॉरी यार। सर मुझे नहीं पता, बट आई जस्ट फील लाइक डूइंग इट, अपने आप ही शुरू हो जाता है। मैं ऐसे पुश नहीं करती हूँ। या यू नो, बिकॉज आपका ना एक पुष्य नक्षत्र की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है टू प्रोटेक्ट, ग्रो करना, एनहांस करना किसी चीज को इंजॉयबल बनाना, किसी चीज को डिस्प्ले करना। अब ये देखो, जब हम पुष्य नक्षत्र का वो ना, पुश का मतलब क्या होता है? टू डिस्प्ले, पुश द मेल, पुश द मैसेज, पुष्या, टू नरिश, टू ग्रो। तो आप ये देखिए, जितनी क्लासेस के मैसेजेस हैं वो डिस्प्ले इनकी तरफ से होते हैं। दैट इज द रियल क्वालिटी ऑफ पुष्या। अगर आप पुष्या को बोलोगे ना कोई चीज डिस्प्ले करो, तो फटाफट से पुष्या डिस्प्ले कर देगा, उस चीज को प्रॉस्परस कर देगा। सो दैट इज नेचुरली इन यू। सो दैट इज द ग्रेस ऑफ देवगुरु बृहस्पति इन यू, you know, always, always. So that is something. Yeah, God bless you, thank you. And you know what, I have also seen कि you know, पुष्या नक्षत्र के लोगों के पास नॉलेज नहीं होती है, they don't have any knowledge, right? But they have wisdom, which is 1,000 times better than knowledge, right? तो ये एक बहुत अच्छी बात है। So अगर आपके कुछ ग्रह पुष्या में है, तो one thing is for sure कि आप लोगों के बीच में wisdom जरूर होगा, right? तो मुझे वो लोग ज्योतिष वर्ल्ड में बहुत सही लगते हैं जिनके पास एटलीस्ट वन प्लैनेट इज इन पुष्या। यू नो, बहुत अच्छी चीज मानी गई है पुष्या नक्षत्र में। ऑन द सेम टाइम मैंने ये देखा है कि उनका बचपन में 15, 16, 18 साल की एज तक उनको कन्फ्रंटेशंस मिलती हैं। कन्फ्रंटेशंस मतलब वो कुछ करना चाहते थे, उनको रेजिस्टेंस मिल रही है, और उनकी लाइफ टिल द एज ऑफ 32 थोड़ी सी अनसेटल्ड सी रहती है। You know, although they are progressing, but it is not settled. Only once they cross 33rd year of your life, उनको दिखने लगता है कि उनको आने वाले 40-50 साल में अपने जीवन में क्या करना है, right? That is when they start seeing कि ओके, मुझे ये करना है, हम ये करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। That's how the life pattern is of people who were born in Pushya, ascendant in Pushya, or their prominent planets in the Pushya nakshatra. थोड़ी सेटल्ड नेचर होती है, बट ऑन द सेम टाइम बृहस्पति की भी थोड़ी सी जो नेचर है वो उसमें आ जाती है, क्योंकि बृहस्पति हर एक के साथ अच्छे हैं, लेकिन अपने मैरिड लाइफ में वो फॉरगिविंग जरूर है, लेकिन वो लव और रोमांस की कमी पुष्य नक्षत्रों को देखने को मिलती है कि वो अपनी वाइफ के लिए डेडिकेटेड, अपने स्पाउस के लिए लोग डेडिकेटेड होंगे, फॉरगिविंग होंगे, बट वो हर्ट भी होंगे अपने स्पाउस की तरफ से, ये बात श्योर है। Their spouse will silently hurt them, but they will be again forgiving and accepting for their spouse. सब कुछ जो है, because they are basically emotional. उनकी outer layer emotional है, उनके inner layer में शनि और बृहस्पति है, धर्म भी है, कर्म भी है, और outer layer में चंद्रमा है। सो उनकी स्किन चंद्रमा जैसी है, लेकिन उनका मन शनि और बृहस्पति जैसा है। शनि टीचर बनाते हैं, लोग कहते हैं ना बृहस्पति आपको टीचर की ट्रेट्स देते हैं, लेकिन जो पैशन होता है ना पढ़ाने का पैशन, दैट कम्स फ्रॉम शनि। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति ने अपना जो नक्षत्र चुना, वो कौन सा चुना? शनि का नक्षत्र चुना। जिसका शनि छठे भाव में होगा, लगन में होगा, वो दूसरों को बहुत सी चीजें बताएगा, ऐसे करो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। शनि 10th हाउस में होगा तो वो टीचर, यू नो, माय डॉटर हैज सैटर्न इन द 10th हाउस, शी लव्स टू, you know, display and explain things, and you know, she want to be like a teacher, you know, she's playing teacher all the time. You know, I see her silently, she's always, you know, aspiring to be a teacher. She has a lot of whiteboards and playboards, and she's writing and making things, ajo aise banaye, ajo aise kare. So that's what Saturn does in the 10th house.
Yeah, see, Shashank is saying, you're so right that I have 10th house Saturn and always wanted to go into teaching but could not. You will become a teacher in Rudra Vedic Academy in our ashram. You will come and dedicate, few months and years of your life here. I guarantee you this thing. I promise you this thing. You know why Jupiter gets debilitated, with Shani? Is for a simple reason that Shani is overly disciplined, overly organized, and set boundaries. You cannot set boundaries for a guru. आप इतना ही करोगे, आप इतना ही पढ़ाओगे, इतने बजे से इतने बजे पढ़ाओगे. कभी मैंने ये सोचा है कि मैं आपकी क्लास अगर 9 बजे शुरू की है तो पूरे 9:40 पे खत्म कर दूं, 40 मिनट का लेक्चर होना चाहिए. कभी 10, कभी 10:15, कभी 9:15. हमने कभी सोचा ही नहीं कि इस टाइम में क्लास खत्म करेंगे या इतना टाइम लग जाएगा. अगर शनि प्रोमिनेंट होना तो मैं आपको अगर 30 लेक्चर प्रॉमिस किए तो 30 लेक्चर ही दूं, उसके लिए 40 ना दूं, 45 ना दूं. शनि क्या कहता है कि शनि कहता है गुरुदेव आप केवल 40 लेक्चर करेंगे. अगर आपकी 40 की कमिटमेंट है, आप 50 नहीं कर सकते. लेकिन गुरु कहता है डोंट रिस्ट्रिक्ट मी. और वहां जाके वो नीच हो जाता है जब शनि उनमें रिस्ट्रिक्शन पैदा करता है. आप कभी भी किसी गुरु के पास जाओगे ना, वो सबसे पहले कहेगा खा लो, आओ बैठो पहले खाना खाओ. नरिशमेंट, पुष्या. आप देखो ना, आप नीम करोली बाबा जी के मंदिर चले जाओ. मैं इतनी सारी स्टोरीज नीम करोली बाबा जी की पढ़ता रहता हूँ. उसमें वो कहते हैं कि जब भी आप नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने जाते थे, वो आपसे मिलते 1 मिनट के लिए थे और आपको धक्का देके बोलते थे कुछ खा के आओ, चलो भोजन करो, चलो प्रसाद खा लो, चलो 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 पहले खा के आओ, जाओ भागो भागो, जाओ ऐसे भागो भागो, कुछ खा के आओ. वो कह रहे गुरुजी हम इतनी दूर से आए हैं मिलने के लिए आपको, और भागो यहाँ से कुछ खाना खा के आओ, भागो प्रसाद खाओ, चलो 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 भागो यहाँ से, भागो भागो भागो. That's what he used to take. पुष्या, नरिशमेंट. क्योंकि वो कोई नहीं जानता था कि उनके प्रसाद में ही सब कुछ है. When I call, my students, they meet me, I always tell them, क्या खाओगे, क्या खाओगे, खाओगे, because I know whatever they are eating, I have blessed it. मेरी पूरी कोशिश है उसको ब्लेस करने की कि इनकी किसी तरह से नरिशमेंट इनको मिल जाए. In Kali Yuga, you cannot hug someone, you cannot touch someone, you cannot, keep your hand on somebody's forehead, but you can give him some food to eat with your own hands. Khalo, khalo, khalo. And the moment Guru gives you a food with his own hand, it is full of आशीर्वाद and nourishment. उसमें पुष्या नक्षत्र की एनर्जी आ जाती है. Always. When students come and sit, at my home, they come and meet me. So I just, even if I'm giving them a cup of tea, तो मैं अपने हाथ से उनको चाय पकड़ाता हूँ. ये लो चाय पियो. और वो हाथ से पकड़ाते पकड़ाते गायत्री मंत्र पढ़ देता हूँ. Just to increase their longevity, health, prosperity, ताकि उनका लगन चमक सके. गायत्री मंत्र का जाप करने से आपका लग्न चमक जाता है, आपकी इंटेलिजेंस चमक जाती है, लॉन्जिविटी आती है, प्रोटेक्शन आती है. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. Pushya Nakshatra people in their childhood or in their young age would love sweets. मिठाई, मीठा खाना उनको पसंद आएगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति है. इफ यू हैव अ चाइल्ड विद पुष्या नक्षत्र, वो बोलेगा मुझे चॉकलेट ले दो, टॉफी ले दो, मिठाई ले दो, जलेबी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पतीसा, नारियल की बर्फी, पिन्नी, पेठा. यू वांट मी टू नेम मोर स्वीट्स? आई कैन नेम मोर एंड मोर. दाल का हलवा, गाजर का हलवा, हाँ, जितना मर्जी खाओ. पुष्या, माय सन आस्क फॉर डिनर, कुछ मीठा तो दो, तो वो होगा. बचपन में मीठा पसंद आ सकता है आपको, इफ यू लाइक. बट एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपको पसंद नहीं है ना, आप अगर अपना विजडम बढ़ाना चाहते हो तो आप थोड़ा सा मीठा जरूर खाओ. पुष्या नक्षत्र के लोगों को मीठा खाने से मत रोको
और अगर वो नहीं खाते तो बृहस्पति के एलिमेंट को एनहांस करने के लिए थोड़ा सा मीठा दिन में जरूर खाओ, स्पेशली इन द मॉर्निंग टाइम। इफ यू कैन ईट सम डेट्स, खजूर मीठी होती है, खजूर खा लो, उसका मीठा खराब नहीं होता है, उसका जो ग्लूकोज का इंडेक्स है वो इतना हाई नहीं। So some food, I never had sweets till 32. After that, I started. Now I love motichur laddu. See, that's the beauty of Pushya. क्योंकि अभी आपका एक्चुअल में दीप्ति बृहस्पति एक्टिवेट हुआ है. This is when actually this Brihaspati has started active and it is giving you inclinations to have sweets. या सी अंतरदशा जैसे आया तो आप उस अंतरदशा की एनर्जी को सिमरत जी अपने पास रखो ना, थोड़ा थोड़ा स्वीट खाया करो. गो वॉक एक्स्ट्रा माइल एंड स्टार्ट ईटिंग. सो जो जब भी बृहस्पति एक्टिवेट होगा आपके जीवन में तो वो आपको समहाउ, चाहे आप शुगर पेशेंट ही क्यों ना हो, डायबिटिक ही क्यों ना हो, आपको मीठा तो वो खिलाएगा. अब एक चीज और हो जाती है, कभी कभी पुष्या नक्षत्र के नेगेटिव इश्यूज में स्टबननेस आ जाती है. मैंने देखा है कि गुरु थोड़े से स्टबन है, वो अपनी गद्दी के लिए, अपनी पोजीशन के लिए बहुत पोजेसिव होते हैं. आप गुरु से पूछो ना कि उनको सबसे ज्यादा क्या चाहिए, बोलेंगे मुझे मेरी गद्दी. वो अपनी गद्दी बहुत सोच समझ के किसी को देंगे. So they are at time become stubborn and they become discriminating in their choice of friends. गुरु के कोई इतने दोस्त नहीं होते हैं, वो डिस्क्रिमिनेट हो जाते हैं when it comes to friendship. 4 लोग इक्वली दोस्त हैं, उनमें से एक जने को वो सिलेक्ट कर लेंगे जिसके साथ वो बेस्ट हो जाएंगे. These are some negative shadow issues of you may have it, you may not have it. They are submissive towards the opposite sex. Submissive होते हैं. They are not very open and straightforward. They are careless with their own money. गुरु को धन से इतना होता नहीं ना, किसी ने मांगा दे दिया. सिमरत जी से कोई भी हेल्प मांग रहे, सिमरत जी 1 मिनट में हेल्प दे देंगे, क्योंकि पुष्या नक्षत्र है, वो नेचुरल है उनके अंदर. शी इज ऑलवेज हेल्पिंग. दे डोंट केयर अबाउट मनी व्हेन इट कम्स टू हेल्प. मदद करनी है तो करनी है, पैसा जाता है तो जाए. ऐसे लोगों को आप फाइनेंसेस नहीं दे सकते. दे विल नॉट बी एबल टू हैंडल. वो चैरिटी कर देंगे, वो दे देंगे. एंड हाउ ब्यूटीफुल इज दैट. पैसे की चैरिटी कर देनी चाहिए. Marriage is a trauma. You know, at times the marriage can be very traumatic for Pushya. That energy is again coming from Brihaspati, but only thing is if your Venus is well placed, अगर शुक्र अच्छा है तो फिर ये जो योगा है वो अवॉइड किया जा सकता है. They have insecurity from the spouse की spouse कहीं कहीं और इंडल्ज ना हो जाए. Like Brihaspati had insecurity after he saw तारा, तो वो थोड़ी इनसिक्योरिटी रह जाती है. करियर इंटरेस्ट के अंदर दिस पुष्या नक्षत्र इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय काउ अडर गिविंग नरिशमेंट. तो मैंने डेयरी इंडस्ट्री, फूड, priests, gurus, spiritual teachers, psychologists, counselors, physiotherapists, people working with special children, charitable organizations, Jyotish, education, child care professions, creative activities, real estate agents, traditional, religious, politics, government positions, geologists, musicians, artists, travelers, because Guru keep on traveling. I've seen people in these professions. What are the favorable activities that you should do in Pushya is that you want to start anything, you want to begin anything, you want to buy anything new. For housewarming, it is the best muhurta for housewarming. Even if you want to start construction, you want to lay a foundation of a building, Ravi Pushya
or Guru Pushya are the best days to do it. Gatherings, music, dance, travel, financial planning, legal assistance if you want, cooking, gardening, activities for children. You want to purchase a pet, you want to take care of a pet, you want to buy a dog, a cat. Just do it on Ravi Pushya or a Guru Pushya. Best day to bring home a pet. You want to start gymming, you want to buy medicines for yourself, you want to buy ration. Make sure on the Pushya Nakshatra of every month you should go and buy the grocery. आज संडे है, जाके ग्रोसरी खरीद के लाओ. You want to buy plants. जिनके घर में तुलसी मैया नहीं चलती है, अगर रवि पुष्या के घर पे तुलसी लेकर आओगे ना, तुलसी चलेगी, तुलसी चलेगी. You want to have a class, you want to join Jyotish, you want to visit religious places, you want to do spiritual activities, you want to do something for your mother, do it on the Pushya Nakshatra. You want to start a mantra, start on the Guru Pushya. Guru Pushya is the best day to start a mantra because Guru anyways वीरवारा. शिव महापुराण कहता है कि कोई भी मंत्र की शुरुआत अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, should start from Thursday. It is clearly mentioned in Shiva Mahapurana. And अगर वो गुरु पुष्या हो तो उससे ऊपर क्या हो. So ladies and gentlemen, I want you people to flash the days of Guru Pushya and Ravi Pushya of 2023 in the WhatsApp group of our class. So how many things have you learned today? Imagine. Brihaspati is also the god of sacred speech and mantras. And I've seen speech therapists. आप मंत्र बोल के ना, जैसे अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है तो सिमरत जी का फोन आता है, दिशा का फोन आता है कि सर वी आर प्रेइंग फॉर यू, वी हैव डन अ माला फॉर यू. वो होती है स्पीच. मंत्र के थ्रू आप किसी को थेरेपी देते हो, आप किसी को ठीक करने की कोशिश करते हो. ये नेचुरल है पुष्या नक्षत्र वालों. और जब उनको एक इंजेक्शन भी लग रहा होगा ना पुष्या नक्षत्र वालों को, तो वो क्या बोलेंगे? राम 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 बोलना शुरू कर देंगे. दे थिंक कि वो इस तरह से ठीक हो सकते हैं. It is very important to have at least one nakshatra in Pushya. If you have, you are a nourisher. You are a nourisher. There's no doubt about it. So, ladies and gentlemen, this is about Pushya. We'll do different planets and padas in the coming class. Do you have any questions, please? Okay, let me see somebody's written. Ruji, Mars in Pushya means nourishing to brother. It means nourishing to brothers, and Mars is also strong desire. I've seen, with Mars in Pushya, people are more inclined towards brotherly figures, friends. You can be nourishment to a lot of people, planning their life. I've seen people with Mars in Pushya working in term insurance business, bought term insurances and all. So Jupiter retro in Pushya. So I will discuss all these planets, we are going to discuss, right? Yeah, IVF center, exactly. Nourishing to creatures below ground. Yes, of course, yes. Right, of course, yes. Right, so we'll discuss Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Shukra, every Rahu, Ketu, every planet will discuss. ये क्या करते हैं पुष्या के अंदर. We will discuss in the coming class, but I want you to do that homework which I always say, कि थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, फिर I will brush up those things to you. Only then it will become a teamwork. I'll just say it and then
So what will happen if someone gets married on the Pushya day? Will the marriage end up in something else? There is always a chance of a third person entering the marriage. Simple. If you're married on the Pushya day, आपके spouse का extra marital affair होने के chances रहते हैं. Chances. I'm not saying होगा. The strong chances. Or there are chances of, you might get an adopted child or a child from a third person. Happen to Brihaspati. Right? So वो एक डर रहता है, your spouse may get involved with someone. हरे कृष्णा गुरुजी। जी हरे कृष्णा जी। गुरुजी एक क्वेश्चन मेरा है। गुरुजी आपने एक वीडियो में बताया था पुष्य में हम फेरे ले सकते हैं, तो वो कितना ठीक है फिर? देखिए डिपेंड करता है कि बट आई वुड पर्सनली प्रेफर कि आप शादी जो है मत करें। अब ये ऐसा होता है ना, कई शादियां जो है बहुत स्पिरिचुअल रिश्तों के साथ जुड़ी होती हैं। अब जैसे मान लीजिए 2 डिवोटीज शादी कर रहे हैं, आपको पता है इस्कॉन में 2 डिवोटी शादी क्यों करते हैं? ताकि वो अपने जीवन को डिवोशन में और आगे लेके जा सकें। वो क्या करेंगे, वो शादी करेंगे और वो हनीमून नहीं मनाएंगे, वो सीधा मायापुर चले जाएंगे द नेक्स्ट डे ऑफ मैरिज। कितने कपल्स ऐसे करते होंगे? आप मेरी बात समझिए, राइट? आप ओके सर। शादी करते हैं, आप ओके। सोचते हैं कि लेट्स गो टू स्विट्जरलैंड, लेट्स गो टू दुबई, हम हनीमून मनाने चलते हैं। और कई लोगों की मैरिज की रिक्वायरमेंट पता क्या होती है कि मुझे ऐसे लोगों के साथ शादी करनी है, ऐसे इंसान के साथ शादी करनी है जो डिवोटी हो और जिससे मेरी कृष्णा भक्ति बढ़ सके। यू अंडरस्टैंड? मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं, right? They would only want to marry a devotee. They are a devotee, they want to marry a devotee so that they can enhance their devotion, right? तो पुष्या नक्षत्र में मैरिज का ऐसे ये नहीं है कि डिवोर्स हो जाएगा या सेपरेशन हो जाएगी, ये बड़ी खराब है। पता है क्या होगा? पुष्या नक्षत्र में आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब जो तारा ने बृहस्पति के साथ किया, और आपका मन फॉरगिविंग होना चाहिए, आपका मन जो है वो बहुत ज्यादा इट शुड बी प्योर, इट शुड बी सात्विक, तभी आप उस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे। सिर्फ इस चीज का डर होता है, अदरवाइज मैं ये नहीं कहता कि इट्स अ बैड कि शादी टूट जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दोनों में से एक पार्टनर आप देख लेना, किसी की भी शादी पुष्या में हुई होगी, आप फेरे लेने को ले सकते हैं। आप एक स्पिरिचुअल रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, बट chances of one partner taking you for granted is there. Exactly. Jahi vidhi rakhe Ram, tahi vidhi rakhiye, that's fine. But as an astrologer, you should always set an expectation कि देखो आपकी शादी पुष्या में हुई है, आपको अपने स्पाउस के लिए दिल बड़ा रखना, उनसे गलतियां होंगी, माफ कर दो, बस। अब तारा से भी तो गलती हुई, बृहस्पति ने माफ कर दिया। सिर्फ पुष्या नक्षत्र में ये प्रॉब्लम आती, ये नहीं होता कि लड़ाई झगड़ा कलेश हो जाएगा शादी के बाद, या शादी टूट जाएगी। इस चीज का डर होता है कि आपका लाइफ पार्टनर ऑफ ट्रैक हुआ, आपको उसको मौका देना होगा वापस अपनी जिंदगी में आने का, बस ये आप बात याद रखना। अगर आपने मौका नहीं दिया तो फिर आपके अंदर बृहस्पति वाली ट्रेड्स नहीं है। यू हैव टू ट्रीट योर स्पाउस एज अ चाइल्ड कि चलो बच्चा गलती करता है, माफ कर दिया, लेकिन अंदर से चाहे दिल टूट जाता है, वो कभी नहीं जुड़ सकता। बट ऑन द सेम टाइम this is one thing that I feel that can happen if you marry on the day of Pushya. लोग कहते हैं ना नरिशमेंट को सिर्फ एक ही चीज मैं बोलूंगा, नरिशमेंट इज ऑलवेज सेल्फलेस। और सेल्फलेस नरिशमेंट अगर मैरिज में कोई दे सकता है किसी को, तो ऐसी मैरिज तो रेयर होती है और बहुत बढ़िया होती है। आई मीन दिस इज फैंटास्टिक। यस नित्य जी, वांट टू से समथिंग? Hare Krishna, Guruji. Guruji, Yeah. you said Mercury doesn't like moon. Yeah. Because of that, whatever incident you explained to us, Guruji. जी But at the same time, when moon and Jupiter sit together in a house, they form a yoga, Yeah. Gajendra Moksha Yoga.
गज केसरी योगा, Pardon, Guruji? गज केसरी योगा. Ah, Gaj Kesari Yoga. How is that, Guruji? Because So you know, I have a video on गज केसरी योगा. जैसा ये कॉम्बिनेशन आपको वर्ड से फैंसी लगता है ना, गज और केसरी का, वो उतना फैंसी नहीं है. आई वॉन्ट यू टू गो एंड वॉच माई वीडियो ऑन गज केसरी योगा. You'll get the answer. okay, we'll do that, Guruji. ठीक है. Thanks, Guruji. I hope you've understood. We've got the clarity, right? And we discussed various padas, which is Leo, Virgo, Libra, and Scorpio, Navamsha padas in this particular nakshatra, along with various planets in this. And we'll take some of the charts also, like Arnold Schwarzenegger has his sun in Pushya. What does that mean? You know, so we'll take various charts for practice also. We'll take charts of our students also. एक दो students का भी next lecture में हम chart लेंगे जिनके prominent ग्रह जो है पुष्या नक्षत्र में है, और उनकी एनर्जी जो है लाइफ की, उसको देखने की, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ कैसे उनकी लाइफ के अंदर काम करती है. और फिर हम नेक्स्ट टाइम हम ये भी देखेंगे कि कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं यू नो इन आवर लाइफ जहाँ पर पुष्या नक्षत्र की एनर्जी हो सकती है. यू नो व्हेन वी लुक एट वेरियस places around us, is it the temples, or I would say hospitals, especially the IVF rooms, where the IVF is done, वहां पर naturally पुष्या नक्षत्र की एनर्जी होती है उन places में. तो मैं इस चीज में एक चीज ऐड करने वाला हूँ कि जब भी हम नक्षत्र करेंगे तो हम वो देखेंगे कि इस पर्टिकुलर नक्षत्र जो हम कर रहे हैं, इसकी एनर्जी इस दुनिया में कौन सी बिल्डिंग में, कौन से ऑफिस में, कौन से प्लेस में नेचुरली होने वाली है, राइट? नेचुरली, बिकॉज देखो ना, जहाँ पर राशन मिलता है वहां पे भी पुष्या नक्षत्र है, घी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, ड्रग स्टोर है जहाँ पे दवाइयाँ मिल रही हैं, जहाँ से आपको नरिशमेंट मिलती है, या कोई भी ऐसी फार्मेसी, these all have पुष्या. ओके, इवन द डिलीवरी रूम्स. सर वो जो नेटल होता है ना, जो बच्चों का जो किड्स जो होते हैं, जो बहुत प्री नेटल किड्स होते हैं जी, सर, उनका वाले में सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज वहां पे बहुत डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है. yes, that is pure pushya energy there. Even at Yes, sir. religious institutions, even when you're sitting next to guru, pushya energy जो है वो हमेशा, cow shelters, yes, वहाँ पे बहुत पुष्य एनर्जी होती है. सो आज कोशिश करिएगा गौशाला जाके थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा शक्कर, जो गुड़ वाला शक्कर होता है वो गौशाला भिजवाओ सारे. मैं तो जा रहा हूँ अपना 100 kg गुड़ वाली शक्कर लेके गौशाला, राइट, और वहां पर मैं देने जा रहा हूँ. तो आप भी जाइए और अपने कर्म अच्छे करिए. इतनी ठंड है और गौओं को आप गरम गरम शक्कर उनको खिलाएंगे तो उनका बहुत अच्छा लगेगा. अपने हाथों से आज 100 kg शक्कर ले लीजिए गुड़ वाली और जाके गाय को खिला के आइए. बड़ा अच्छा लगेगा आपको, आपके कर्म अच्छे होंगे, देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पे बरसेगी. तो मैं तो बस अभी ये क्लास फिनिश करके फटाफट से निकल रहा हूँ ताकि मैं अपनी गायों को जो है शक्कर खिला सकूं इतने ठंड के मौसम में और उनको फायदा हो सके. तो आप जितने लोग कर सकते हो जाओ, भागो, करो, भाग जाओ फटाफट गौशाला और गुड़ और शक्कर खिला के आओ. ठीक है, ऑलराइट, चलो आज इतना ही.